Hello friends, good evening and welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Testbook, and also welcome to the series of Ecologics. So in this series, as a part of this series, we are discussing the most important concepts from the economics component, which is very important for the regulatory bodies examination and for all the examination wherever economics component is there. So the topic that we are going to discuss today is the types of poverty, right? So यहाँ पे different types of poverty is there. So we would be discussing the types of poverty. ठीक है, बहुत ही डिटेल में व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी दैट वी वुड बी डिस्कसिंग एज अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. बट फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. यू नो दैट द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम in the regulatory bodies examination, and that is why we have launched this particular free initiative current affairs series for you, those who are preparing for regulatory bodies examination. It can be RBI Grade B, it can be SEBI Grade A, it can be NABARD Grade A, it can be IFSC CDB. So बहुत सारे exams हैं. So whatever examination you are preparing for, current affairs will be relevant for those examination. And in the regulatory bodies, multiple areas are there in the current affairs. For example, PIB, finance current affairs, RBI updates, government schemes, ESI reports, important reports. So all these areas would be covered as a part of this current affairs series. So if I tell you the schedule, which you can see here, that the PIB current affairs session is conducted on every Monday at 6 p.m. by Pushpak Sir. Finance current affairs session is conducted on every Tuesday at 6 p.m. by Madhav Sir. RBI update session is conducted on every Wednesday 6 p.m. by Madhav Sir. Then government scheme session is conducted on every Thursday at 6 p.m. by me, Prakash. ESI current affairs session is conducted on every Friday at 6 p.m. by me again, and important reports session is conducted on every Saturday at 6 p.m. by Mahesh sir. So this is the basic schedule यहाँ पे जो which you can follow for the current affairs updates. And in these sessions we are not only telling you the important current affairs, rather we would be also telling you why this is important, what are the important dimensions from this particular news which you have to cover for the examination. Right, so let's start the today's discussion, that is poverty and the different types of poverty. So friends, if I tell you about the poverty, so you know very well what is poverty. So poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials to enjoy a minimum standard of life and well-being that's considered acceptable in the society. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात करें या पूरी कम्युनिटी की बात करें, दोज who are lacking the financial resources which is required to enjoy a minimum standard of living. जो बेसिक यहाँ पे necessities है उसको पूरा करने के लिए जो resources की जरूरत है, they do not own those resources, so which means they fall below the poverty line. ठीक है, तो वो पॉवर्टी की डेफिनेशन में आते हैं एंड दे फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन. बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, वी ऑल नो. बट यहाँ पे पॉवर्टी के डिफरेंट टाइप्स आर देयर. ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सो दीज आर द मेजर पार्ट्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा पॉवर्टी को और फर्दर बाइफरकेट नहीं किया जा सकता. पॉवर्टी कैन फर्दर बी बाइफरकेटेड, बट दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी विच यू शुड नो फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज एंड ऑल्सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज. तो नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ठीक है, नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. नंबर सेकेंड इज रिलेटिव पॉवर्टी, then situational poverty, generational poverty, and last is the multi-dimensional poverty. So we would be discussing all these types in this session one by one. So let's start with the absolute poverty first. So absolute poverty can be measured. Let's read this first, then I will make you understand what is the actual meaning of absolute poverty. So absolute poverty can be measured through the concept of the poverty line, which defines a threshold minimum level of income or expenditure below which people are considered poor. Absolute poverty refers to the total number of people living below the poverty line which are not able to access the basic standard of living or basic means. देखिए, the concept of absolute is for, I am giving you just an example. Suppose if you are in college, ठीक है, अगर आप कॉलेज में हैं and in order to clear any particular paper in your semester you need to score 40 marks. ठीक है, 40 marks, 33 marks, it can be anything. So this is the absolute concept where there is a fixed threshold. ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट कंसेप्ट वेयर देयर इज अ फिक्स्ड थ्रेशोल्ड एंड आफ्टर अचीविंग दैट थ्रेशोल्ड बेसिकली यू अचीव एनी पर्टिकुलर टारगेट. सिमिलरली अगर हम बात करें एग्जाम में, आपके कॉलेज के एग्जाम में, सो इफ यू आर इन द कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में अगर आप हैं यहाँ पर, सो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे इफ आई स्कोर 40 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर आई वुड क्लियर दिस पेपर, यू नो वेरी वेल. सो दिस इज द एब्सोल्यूट मार्क्स हियर. ठीक है, एब्सोल्यूट मार्क्स है. तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द concept of poverty, absolute poverty,
सो देयर इज अ फिक्स थ्रेशोल्ड, उसको क्लियर, उसको अचीव करने के बाद दैट पर्सन डू नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को नहीं अचीव किया, ठीक है, देन इन दैट केस दैट पर्सन वुड फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि poverty line is rupees 1000 per month, poverty line is rupees 1000 per month, this is just for an example, right? So those who are earning rupees 1000 or more, those who are earning rupees 1000 or more in a month, they are not poor, they do not fall into the category of poor, right? Those who are earning 1000 rupees, they would fall into the, they are poor, basically they would fall into the category of poor, and they would be the in the below poverty line, right? So I hope you are getting it. So this is the threshold, this is the threshold. So in the absolute poverty, threshold is mentioned. So once you achieve that threshold, उसके बाद क्या होगा, आप फिर उस कैटेगरी में पुअर नहीं होंगे, और एक बार वो थ्रेशोल्ड अगर आपने उसको अचीव नहीं किया, then in that case you would be called as poor. Got it? So this is the absolute concept, जहां पे हमारे पास फिक्स थ्रेशोल्ड है कि आपको यहां अगर आप इसको अचीव कर रहे हैं तो आप above poverty line है, APL. If you are not achieving this income, then in that case you are in the below poverty line. Got it? So this is the first concept of absolute poverty. Second concept is related to relative poverty. इसको एक बार पढ़ते हैं, then we would discuss what is the actual meaning of relative poverty. So it is defined from the social perspective, that is living standard compared to the economic standards of population living in surroundings. Hence it is a measure of income inequality. This is very, very important term that you have to remember. Relative poverty occurs when people in a country do not enjoy a certain minimum level of living standards as compared to the rest of the population, and so varies from country to country, sometimes within the same country. It is important to highlight that one can be meeting his or her biological needs but still be considered as poor under relative poverty measurement. So what we have discussed in the case of absolute poverty case में I told you कि there is a fixed threshold, right? कि यहाँ पे if suppose threshold is 1000 rupees and if you are earning 1000 rupees per month, then you would be in the above poverty line. If you are not earning 1000 rupees, then you would be in the below poverty line, right? This is the absolute concept. Relative concept of what is happening here कि there is no fixed threshold. For example, same example लेते हैं कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में आपके पेरेंट्स अक्सर बोलते होंगे यहाँ पे शर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स आए हैं, शर्मा जी के बेटे के 90 मार्क्स आए हैं, आपके 70 क्यों आए हैं, उनके 85 आए हैं, आपके 60 क्यों आए, राइट? सो दिस इज द बेसिकली कंपैरिजन होता है यहाँ पे, राइट? सो इन द रिलेटिव पॉवर्टी कंसेप्ट देयर इज अ कंपैरिजन, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. किसी की इनकम यहाँ पे ज्यादा है, किसी की इनकम यहाँ है, किसी की इनकम यहाँ है, किसी की इनकम है. सो व्हेन वी कंपेयर देयर इनकम, ठीक है, जब उनकी इनकम को हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली दैट पर्सन इज पुअर जिसकी इनकम इज लोअर, राइट? सो दोस पर्सन हु इज हैविंग अ लोअर इनकम, सो दे आर कंपैरेटिवली पुअर. तो एज पर द रिलेटिव पॉवर्टी कंसेप्ट यहाँ पे कंपैरिजन होता है, एंड दो दैट पर्सन माइट बी एबल टू फुलफिल ऑल इट्स बायोलॉजिकल नीड्स, बट स्टिल अंडर द relative poverty measurement he can be considered as poor when he will be compared with someone else. ठीक है, तो अगर किसी की वेल्थ ज्यादा है तो बेसिकली वहां पे वो आपसे क्या हो गया, आपसे अमीर हो गया, ठीक है. उससे किसी की वेल्थ ज्यादा है तो वो पर्सन सेकंड पर्सन से अमीर हो गया. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंपैरेटिव कंसेप्ट, ठीक है. ये कंपैरेटिव कंसेप्ट है रिलेटिव पॉवर्टी के, जहां पे चीजों को कंपेयर किया जाता है. गॉट इट? तो यहां पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एवरीवन इज नॉट अर्निंग द सेम अमाउंट, राइट? समवन इज अर्निंग 10 लाख रुपीज पर मंथ, समवन इज अर्निंग 5000 रुपीज पर मंथ. तो देयर इज अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, बट दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ दैट, ठीक है. 10 लाख वाले को यहाँ पे कंपैरेटिवली रिच माना जाता है, जो 20 लाख कमा रहा है उसको कंपैरेटिवली और रिच माना जा रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. रिलेटिव, द मीनिंग ऑफ, बेसिक मीनिंग ऑफ रिलेटिव इज द कंपैरिजन, ठीक है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट, यू हैव टू रीड द लास्ट स्टेटमेंट, दैट वन कैन बी मीटिंग हिज और हर बायोलॉजिकल नीड्स बट स्टिल बी कंसिडर्ड एज पुअर अंडर द रिलेटिव पॉवर्टी मेजरमेंट. गॉट इट? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉवर्टी, दैट इज सिचुएशनल पॉवर्टी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिचुएशनल पॉवर्टी? सिचुएशनल पॉवर्टी बेसिकली इट इज अ टेम्पररी टाइप ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन अकरेंस ऑफ एन एडवर्स इंपैक्ट लाइक एनवायरमेंटल डिजास्टर, जॉब लॉस, severe health problem. People can help themselves even with a small assistance as the poverty comes because of unfortunate event. So the name of this type of poverty is situational poverty, ठीक है. Poverty comes out of any particular situation. एक situation के चलते यहाँ पे that person is poor now. For example, suppose if you are
हैविंग अ बिजनेस, ठीक है, आपका एक बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, यू हैव अ डिसेंट क्लाइंट बेस, ठीक है, आपको पूरा नॉलेज है, बट यहां पे एक सीवियर इलनेस होगी, फॉर एग्जांपल कैंसर, ठीक है, तो आपके फैमिली में किसी को कैंसर हो गया, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मिस्टर एक्स की फैमिली में किसी को कैंसर, सपोज ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो इन दैट केस क्या हुआ कि यहां पे मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा, पूरा यहां पे उनके सारे जो पैसे उन्होंने कमाए थे सब कुछ जा रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली उन्हें अपने बिजनेस में भी काफी लॉस करना पड़ा, उन्हें अपना घर बेचना पड़ा, उन्हें अपनी एफडी तोड़वानी पड़ी, उन्हें अपने स्टॉक सेल करने पड़े, सो ही विल बी इन द कैटेगरी ऑफ पुअर नाउ, क्यों, ड्यू टू वन सिचुएशन एंड दैट सिचुएशन इज सीवियर इलनेस, तो उस सिचुएशन के चलते मिस्टर एक्स becomes poor, ठीक है, मिस्टर एक्स becomes poor due to that particular situation, but the thing is if he is provided some assistance, if he is provided small assistance, अगर उसको उनको small assistance provide कर दिया जाता है, then he may get rid of this particular situation because he knows very well कि how to make the business, he is having a very good client base also, so he knows everything about the thing, he knows how to earn the thing, how to manage the resources, but the ultimate thing is that right now he is not having the resources, तो अगर उन्हें थोड़ी सी help मिल जाए, so he can get rid of this particular situation which is a situational poverty. So poverty just because of any particular situation is a situational poverty. This can be anything, right? This can be environmental disaster, this can be job loss, this can be severe health problems, and also this can be any situation due to which a person become poor. Got it? So this is the concept of situational poverty. Then comes the generational poverty. What is the meaning of generational poverty? Generational poverty is basically handed over to individuals and families from generations before them. तो वो जो poverty उनके पास आई है वो सिर्फ उनके पास वो पुअर नहीं थे, उनके पहले उनके फादर फोर फादर्स वो सारे के सारे पुअर थे, तो दैट इज बेसिकली दैट हैज बीन पास्ड through the generations itself, right? So this is when poverty is handed over to individuals and families from generations before them. In this type there is usually no escape from it as people are trapped in its causes and have no access to tools that will help them get out of it. For example, यहाँ पे जो forefathers से they did not have any property, right? They did not have enough education, they did not have any income source, किसी भी तरीके का इनकम सोर्स नहीं था, तो वही सेम चीज आगे पास हो गई, ठीक है, वही सेम चीज आगे पास हो गई, वही सेम चीज आगे पास हो गई, तो जनरेशन से बेसिकली वो पॉवर्टी जो है वो पास होती जा रही है आने वाली अपकमिंग जनरेशंस को, एंड दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज अ जनरेशनल पॉवर्टी, ठीक है. मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ पॉवर्टी, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? इट्स नेम डिपिक्ट्स मल्टी डायमेंशन, ठीक है, जो पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल लेवल पर है, दैट इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. लेट्स डिस्कस दैट. So multidimensional poverty is made up of several factors that constitute poor people experience of deprivation, such as poor health, lack of education, inadequate living standard, lack of income, disempowerment, poor quality of work, threat from violence. तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते दैट पर्सन इज पुअर. तो मल्टीपल डायमेंशन है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं दैट ही इज नॉट हैविंग इनकम, सिर्फ ये डायमेंशन नहीं कि ही इज नॉट हैविंग इनकम दैट इज व्हाई ही इज पुअर. नो, ही इज हैविंग अ पुअर हेल्थ, ही इज हैविंग अ लैक ऑफ एजुकेशन, he is having an inadequate living standard, lack of income is also there, disempowerment. So multiple dimensions are involved behind that person, then only he become poor, ठीक है. So this is the case of multi-dimensional poverty where a person is poor because of multiple dimensions, क्योंकि यहाँ पे multiple dimensions पर भी वो नहीं है सही, उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, उसकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मल्टीपल डायमेंशंस आर देयर जिसके चलते ही इज पुअर, ही इज फॉलिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, एंड दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी वी कॉल इट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑन मल्टीपल डायमेंशंस. Got it? So these are the 5 types of poverty. Let's revise them once again so that आप उसको अच्छे से आपको याद हो जाए. So poverty, I told you what is the meaning of poverty. Poverty is a state or condition जहाँ पे person जो है basically he is not having the financial resources to enjoy a minimum standard of living, जो अपनी basic necessity को पूरा करने के लिए if he is not having the financial resources or any other resources, then in that case that person is poor. Now different types of poverty is there: absolute poverty, relative poverty, situational, generational, and multidimensional. What is the meaning of absolute poverty? Absolute poverty is a basically concept where is a fixed threshold. जहाँ पे एक threshold fix है, so after achieving that particular threshold, the person will fall above the poverty line, and if he is not achieving that threshold, that person will fall below the poverty line. Right? For example, I have given you the example also. Suppose 1,000 rupees is the
poverty line. Suppose this is the poverty line, then what will happen? If someone is earning rupees 1000 or more, then he will not be considered as poor. If someone is earning less than 1000 per month, then he will be considered as poor. So there is a fixed threshold here in the absolute poverty. But when we talk about the relative poverty, so there is no fixed threshold here. This is a comparative concept, जहां पे चीजों को कंपेयर किया जाता है, दो कंसेप्ट को कंपेयर किया जाता है, दो लोगों को कंपेयर किया जाता है. सो इफ समवन इज हैविंग हायर इनकम, देन ही इज कंपैरेटिवली रिच. अगर हम उससे कंपैरिजन करें उसको दूसरे पर्सन के साथ हु इज हैविंग अ लो इनकम, राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेटिव कंसेप्ट एंड आई हैव गिवन यू द एग्जांपल एज वेल कि आपके एग्जाम में सपोज आपका कोई फ्रेंड है, उसके 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, आपसे कम भी किसी के 70 आ रहे होंगे, किसी के 60 आ रहे होंगे. सो कहने का मतलब दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन, यू ऑल आर पास, ठीक है, आप सभी पास हैं, बट द थिंग इज दिस इज अ कंपैरेटिव कंसेप्ट वेयर वन पर्सन इज कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. सिचुएशनल पॉवर्टी इज द पॉवर्टी जहां पे पॉवर्टी किसी सिचुएशन के चलते आ रही है. इट कैन बी इन्वायरमेंटल डिजास्टर, इट कैन बी जॉब लॉस, इट कैन बी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम. बट हाँ, अगर उस पर्सन को बेसिकली थोड़ा सा असिस्टेंस मिल जाए तो ही कैन गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. जनरेशनल पॉवर्टी इज द पॉवर्टी जो कि बेसिकली यहां पे जनरेशन से उसको ट्रांसफर होती है, ठीक है. तो वो अपने लेवल पर पुअर नहीं था, उसको जनरेशन से, उसको उसके फोर फादर से जो पॉवर्टी है वो बेसिकली इनहेरिटेंस में मिल रही. सो दिस इज अ जनरेशनल पॉवर्टी. एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज द पॉवर्टी विच इज मेड अप ऑफ सेवरल फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुअर हेल्थ है, लैक ऑफ एजुकेशन भी है, इनएडिक्वेट लिविंग भी है, ठीक है, लैक ऑफ इनकम भी है, डिसएम्पावरमेंट इज ऑल्सो देयर, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क इज देयर. सो कहने का मतलब है मल्टीपल डायमेंशंस पर यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी. सो दैट इज अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. Got it? I hope you have understood the concept. So this is all with today's discussion, that is poverty and the types of poverty. And friends, ऐसे ही और concepts को अच्छे तरीके से डीप में समझने के लिए you can join our course which we have recently launched, that is RBI Grade B 2025 Lakshya batch. And as a part of Lakshya batch, this is a foundation course basically for 2025 examination. As a part of Lakshya batch, we are providing you the live classes, we are providing you the MCQs, we are providing you the notes, we are providing you the descriptive writing component. Then further we are providing you interview guidance program. We are also providing you one-on-one mentorship. These are the prime features of our course that we are providing you. So ये बहुत ही prime feature है, out of which I love live classes because in the live classes we are providing you the things from very scratch, ठीक है, बिल्कुल completely zero से चालू करेंगे. So irrespective of your background, you may be from commerce background, you may be from science background, you may be from arts background or any other background. That does not affect us because we are going to start covering the concept from very scratch so that you can build your foundation. So initially the focus will be your foundation building, and then we will take you to the requirement of the examination. So along with the completion of syllabus, ठीक है, along with the completion of syllabus, we would be focusing on the फाउंडेशन बिल्डिंग, ठीक है, फाउंडेशन बिल्डिंग पे फोकस करेंगे. सो दैट नॉलेज विल डेफिनेटली हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट योर लाइफ. ये आपके कंसेप्ट आपके काम आते रहेंगे. एंड बीइंग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, दे वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड फ्रेंड्स, the link of this course is given in the description below. You can check the details there. And also in the description we are providing you the Google form. So if you have any query, कोई भी query है आपके पास, so guys you can see that query. You can fill the Google form, whatever query, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी query, you can fill the Google form and our team will get back to you to resolve that particular query. So friends, in order to subscribe the course, the link of which given in the description box of this video, you can use the coupon code Prakash. This is my name, and after using this coupon code you will see a drastic discount in the final prices which will make the course affordable for you. And this is my personal telegram group, ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन करिए. After joining this, what you will get first of all regular updates. You will get regular updates with respect to the important sessions, with respect to the important examination updates, and along with that you can always ask query whenever you have. Whatever query you have, you can directly post your query in the group and I'll personally be resolving your query because this is my personal telegram group. So you can simply join your basically this group and you can ask whatever query you have, ठीक है. So this is going to be the advantage for joining this particular group. So this is all with respect to today's discussion around the poverty and the types of poverty. I hope you have enjoyed the session. And guys, those who are new here, I would like to tell them कि from Monday to Friday we conduct YouTube session at 5 PM, ठीक है, जहां पे the series of ecologics is going on, and at 5:30 PM we are having the master class from Monday to Friday same, where we are discussing currently the most important MCQs for phase 2 of RBI Grade B as well as NABARD Grade A examination.
सो इसके बाद इमीडिएटली वो है, बट वो यूट्यूब पर नहीं होती, वो हमारे ऐप पर होती है. सो यू कैन विजिट द ऐप एंड यू कैन ज्वाइन द मास्टर क्लास विच वुड रियली बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है जी. एंड ऑल्सो गाइज, in the coming week we are going to basically bring session related to descriptive writing. So we will be discussing how to approach the descriptive writing, what are the major components of descriptive writing, and even if you do not know any particular concept, so how you can approach the descriptive writing. These all concepts would be discussed in the coming week session that we are going to start till your phase 2 of RBI Grade B examination. So thank you very much for joining the session. This is all for today's class. I hope you enjoyed the class, you learned something new. So we'll meet at master class at 5:30, where we are going to discuss most important MCQs for the upcoming RBI Grade B and NABARD Grade A Phase 2 examination. Thank you very much, guys. Have a good day.